this program started, many of the dietary items that are commonly used in those particular areas have been incorporated into the menu. And recently, many changes have been made looking into the importance of diet as well as nutrition in the in these days. And as all of you are quite aware, India is a country with very varied climatic conditions with different languages and culture. Different types of the food items are growing, and they are included in the staple diet, and these staple diet have to be incorporated into the midday meal menu, so that an interesting menu will be created. And especially the kids are involved in this particular sector, so or the catering thing. So the most important thing we have to take care is about the taste along with the nutrition aspect of it, and at the same time it should be acceptable for those kids. So the regional and seasonal foods have to be incorporated along with the regional preferences. So that is one among the very important thing that we have to be considering while planning the midday meal diet menus. And again, if we think about Ahara Kalpana, again, classical Ahara Kalpanas like Manda Peya Vilepi kind of a thing are quite not effective, because these classical items are mainly indicated especially when the Agni is very low. And here in these kids, the Agni is good, and they can digest very well the items. So we can think about the traditional food preparations that are having good nutritive values, along with few of the dietary items that are good for the health, along with that rich in the nutrition which are not commonly included in the menu. I will be discussing about these particular aspect. And again, to think about the basic aim of midday meal program was to avoid classroom hunger and increase school enrollment, increase school attendance, and improve socialization among the caste, and address the nutritional issues, malnutrition issues, and empower the women through employment, because this particular program needs the um, cooks as well as the assistants. So the locally the women will be employed in the different schools. So that is addressing many issues together in a one umbrella. So, if we think about the intervention, like their plan is like for primary school and upper primary school, different set of the nutrition is being provided around 200 days in a year. And always this midday meals menu will be an additional food supply, but not the substitute for the regular meals of the child. And again, for primary school children, it is 480 calories and 12 grams of the protein, along with micronutrients like iron, folic acid, and vitamin A. While for the upper primary, it will be 720 calories with 20 grams and micronutrients. Again, same, that is iron, folic acid, and vitamin A. And different quantities with respect to the food grain. It is 100 grams of food grain. It may be cereal, or it may be even the millets. And pulses 20 grams, vegetables 50 grams, including the leafy and non-leafy vegetables that Your are slide is seasonally. on second slide. Oh, sorry. I think there is some issue. Let me just do it without the slideshow. Is it now visible? Yes, yes. Yeah, I think this would be better, because when I put the slideshow, that was like for me, slide was changing, but for you people, I think the slides did not change.
just to stress the previous slide about the calories as well as the protein requirement for primary and the upper primary school children. Then the amount of the food grains for the upper primary school, there will be 150 grams of cereals or pulses, 30 grams of pulses, and vegetables 75 grams, that is leafy and non-leafy vegetables, and 7 grams of fats or oils, totally counting for 720 calorie of energy. And whenever the preparation aspect is concerned, as I mentioned, various sectors are involved, that is kitchen and store involving the rural development and the Ministry of Housing and Urban Affairs, along with Panchayat Raj and Human Resource Development. So all these together, that is sustainable development is taking place in various sectors. So that is one thing, and along with that the hygiene is one among the important thing, and one is drinking water supply and another one is the toilet facility for the hygiene purpose, and also for the health program, as the health is one among the most important thing that we are considering here. So the Ministry of Health and Family Welfare is included in this particular aspect. And as I mentioned, the items that are included in the menu will be cost effective, and it should be easily preparable, made of locally available food substances, with a regular change in the menu. As I told, like the students are involved, and even for anybody, eating the same menu all round the week is not possible. So these aspects are covered. And if I think about Ayurveda, then most important thing, like here they stress upon the calorie content of it, but Ayurveda mentions about the intake of the food substance based on the ugly. So we have to think about the quantity of food consumption should not be restricted for the calorie, but it should be with respect to the uh, amount of food, that is Trivida Kukshi Adhyaya, what has been mentioned. So one third of the liquids, one third of the solids, and the one third should be left empty for the action of the doshas that have to be taken care of. And Sarva Rasabhyasa is considered among the best nutrition provider, because in the modern, like if we think about the nutrition angle, in the modern we have the aspects like carbohydrates, fats, protein, vitamins, minerals, like that, different nutrients. But in Ayurveda, the nutrients can be correlated to the different rasas, because based on the different rasas, the different karmas have been connoted, whether it is with respect to the nutrition, whether it respect to the metabolism, whether it is respect to the Agni. So all these aspects are covered on the basis of the rasas. So the food containing all kinds of the rasas have to be consumed to get the maximum nutrition. And again, the food facilitating the expulsion of the malas and removal of the obstruction should be given to enhance the nutrition, because the margavaroda can lead to the nutritional deficiencies. So this will help in the reducing the margavaroda also. So if the complete nutrition will be represented by Shadrasatmaka Ahara Sevana. Then, whenever we speak about the regionally available food substances, then the food should be sustainable, effective, and non-pharmacological. So again, effective will be rich with respect to the nutrition, awareness in the community. Like here, awareness in the community is brought about through the children, because what food we are giving, that will be like along with the importance, if it is explained what food the person is taking every day while providing the midday meal, the nutritional importance, if it is stressed upon by the teachers, then
the awareness will be created in the children. And again, the children usually they don't keep quiet, they go home, interact with their parents, and they will be in turn creating awareness to the parents, and so on the chain will be extending. Or else the students among their friends they will be discussing, and thus an awareness will be created in between the fellow people. So like that, and at the same time, as the locally available food grains are used, the local market people will be benefited. Along with that, even the local farmers will be benefited. So it will be totally sustainable development. And again, sustainable development goal is one among the 20-point program that has been mentioned, that is included under the government of India policy. So that also will be acting as a component of that particular program. So, at the same time, health promotion, disease prevention, as well as the cure of the disease can be taking place by means of the uh, food. And next thing is, if it is a midday meal plan, then different kinds of the food substances can be incorporated. As I mentioned, if it is in the northern part of India, because regional importance is always given, so where the wheat eaters are there, so it may be roti sabji, wherein along with the dal, or or the sabji prepared of the lentils, or soya bean, like that different thing, the or and the vegetables also. So like that, or else rice and lentil, or tehri, which is one among the very commonest thing, with the milk. Again, milk large quantity is not possible, so around 150 ml of milk per child has been provided. Or else bread and lentil, or even the vegetable, mixed vegetable rice and the lentils, like that we can have different combinations on different days. So again, even the pulses also, different pulses can be used. Wherein in Karnataka, the Bengaluru cyclic menu, again, which is provided by the Akshay Patra. As all of you are quite aware with the fact that Akshay Patra is one among the very largest kitchens in the Asia. So they have a very good and hygienic way of preparation of different variety menus. It, and again, in South India, rice is one among the staple diet, and eating of wheat is comparatively less. So here they have either rice and sambar and mixed vegetable sabji, or another one pot meal like khichdi or bisibele bath, they call it as, or rice with moong dal sambar and rice with chana dal sambar. Like that, the thing goes on changing. And sometimes even the sweet items are also included. Khara pongal, again it is pongal is khichdi, and along with the jaggery and sweet payasam, fried groundnut. Or else uh, again, somewhere hayagriva preparation is there. Again, hayagriva is a sweet preparation made from chana dal. So like that, different kinds of the variety menus have been included. This is again one among the very lucrative menus, and which is again quite tasty also, and at the same time healthy also. uh, and again, if we want to have the different menus, as I told, based on different places, it may be vegetable upmas or vegetable dalias, khichdi or tehri and bisibele bath, as I told, or vegetable pulao, or roti sabji with dal, or dal chawal. Like that, different kinds of the menus can be included. And but again, here, like now, this is the present menu that is going on. So if we make it more healthy, then what changes we can bring about? That is, commonly the cereals have been used for the supply of the energy. But on few days, instead of only cereals, along with the cereals, we can use the millets like ragi, kangu, bajra, jawar, etc. Depending on the availability and also the season. And again, barley can also be used. Again, a cost will be going to be a bit higher compared to the simple rice preparations, but still,
in due course of time, the thing becomes acceptable, because in the course of time, the growth of millets has reduced to a large extent. So government is promoting these millets, especially all of you are quite aware. 2018 was considered as millets year in India, and presently India has pursued WHO to make this year, that is 2023, as the International Millets Year. So millets is being promoted with respect to the different food preparations, as all of you are quite aware, the Arogya Melas. In that, various millet food preparations are being exhibited to bring about awareness in the community. And at the same time, the cultivation of millets is also being promoted to bring about the previous balance. Like previously, like only cereals were not grown. In the white revolution, as a result of revolution, only the cereals like the rice and wheat, they were promoted to much extent, and the other millets, they gradually declined due to the less usage, as well as due to the less demand. So now the demand is being created by the government because of the healthy nature of these millets. So this can be included in the like forthcoming menus, because these two menus which I have mentioned is presently running menus. So they changes can be made, and again different pulses can be used. Like again, most commonly the red gram and Bengal gram are being used, so, and also soya bean. So instead of that, even green gram, as per Ayurveda, which is one among the best among the pulses, or else even the lentil or masoor, and moat or moth bean, all these things can also be included, because variety of these things will enhance the micronutrients that are supplied to the individuals. And as per cost is concerned, I was just going through, and almost they are like similar in cost, with chains maybe, like especially for the midday meals, when they buy in quintals, it may be differing in around 1,000 rupees or so. So I feel the government can gradually afford to have all these things, looking into the health of the children. So that is one thing. And vegetables also seasonally and regionally available ones, and milk on fixed days. Presently it is possible. In the due course, it may be possible that every day it is being supplied to the kids. And again, if we think about why I'm pressing upon much on the millets, because kudhanya or trinadhanya, they are like very important in the view that non-communicable lifestyle disorders and metabolic disorders like diabetes, hypertension, PCOS, like that, it has been increasing, ballooning up to a great extent. So that is going to help out. And apart from that, these millets are made of complex carbohydrates, and that will help in preventing these children developing the problem. And in the same time, the children will be acquainted for different kinds of the food substances, which is very positive change that will be imparting in the young children. So that same will be continuing to the adults also, in the adulthood also, because they get acquainted with these particular things, and they started taking daily, and it becomes a habit, and that good habit will be inculcated in the future also. And different millets, if we think about, it may be bajra or ragi or jawar or kanguni or sawa or china. Gaveduka again is not quite commonly available, or kodo, like that different kinds of the millets are available. And as I was telling, seasonal and regional importance have to be always given. So here five top millet growing crop states, that is Rajasthan, Karnataka, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, and Haryana. Like again, different millets are being grown in these different states. And again, in the other states also, these millets are available, especially this bajra and ragi. These are available in different other states also.
Again, uh, the growth of the millets, as it is, I told, it is being promoted by the government. So gradually this growth will enhance, and whatever the deficit in certain states, that also will be taken care in the due time. And as I mentioned, like a complex carbohydrate aspect, along with that, the millets contain more amount of protein as well as dietary fiber compared to the cereals. And also they are gluten free and non allergenic, and at the same time low glycemic index, which will be good for the diabetics, and at the same time it is good for the obesity, because as I mentioned, they are quite filling. Less amount of the millets will fill the person will have the satiety value, and due to that, the whatever obesity issue is there even in the poor community, that is going to be taken care of. But at the same time, they are rich in the micronutrients like calcium, iron, zinc, and iodine, so that would be quite helpful in protect, because these come under the protective and regulatory food, which help in prevention of the diseases, including the infectious diseases. So that will be quite helpful in both preventing the non-communicable as well as communicable diseases, because the nutrition aspect is being fulfilled during this intake of different kinds of the food. So they are considered among the superfoods or nutri cereals, also known as nutri cereals. So at the same time, the nutritional security will be provided, and it will be sustainable. And again, whenever we speak about, like, I'm just coming upon the Ahara Kalpana part of it. And Ahara Kalpana, like as I was mentioning, I'm not going for the cereal preparations because they are already into the menu. So, what change we want to bring in the midday meals, that I'm more emphasizing upon. In the northern part of India, most of the places, bajra is one among the very commonly available millets. So, it can be used in the form of upma or khichdi or dalia, which is used, but not that frequently. So, this can be brought into the usage more. And at the say again, if it is they want it in the form of rotis, and bajra roti can also be had along with the sabji, or else mixed vegetable pulao with the bajra, or bajra bhat with kadhi. Like, these are the different varieties that can be incorporated in the due course of time. Or else where ragi is more commonly available, again ragi balls with sambar or dal, these kinds of the preparation, these are very easy to prepare. At the same time, they are quite nutritious. Or else this is here liquid, semi liquid preparation that is visible, that is ragi ambli, it is called as. Again, this is a preparation which can be prepared very fast. And if we add vegetables also into this preparation, then it will be the nutritive value will be enhanced, and at the same time it is filling also, uh, and rich in iron and calcium. So again, here in this particular preparation, dal is not being added. So whenever we use this particular thing, we can blend, like mix it up with uh, some of the pulses salads, like as a side dish, or some dal as a side dish, like that. Or else this chana chat or something like that we can include along the side of this particular ragi amli. So both the part of protein as well as carbohydrate part of it will be included. And another item along with the rice is sama chawal. Again, whatever preparation from the rice can be prepared with the sama chawal also, whether it is pulao or it is a khichdi or is a chawal with dal or curry, or it can be used in the form of sweet, also in the form of kheer. So any of the things. Then comes the jawar or the sorghum. So again, this also can be used, like whole sorghum can be soaked and then cooked on the cooker next to prepare the upma.
or else it is in the form of roti sabji, or it may be in the form of muthia, or it is in the form of paratha. Like that, different forms it can be used. And also the thalipit can also be used, or same ambli which is prepared with the ragi flour can be prepared with the jawar also. And also this little millet again can be used in the form of lemon rice, or jawar chila, etc. That can also be used in this midday meals program. And again, these are different actually in the Orissa this thing website. So many millets preparation were available. Just I have taken few screenshots of those preparations, which include the barnyard millet, or sawa, with which the cutlet has been made. Again, these things cannot be included in the midday meals program because the process is quite cumbersome. Preparing in short time is not possible, but simply for the interest, like these all interesting preparations can also be included in our diet. For that reason, I have just put these few of the slides, because quite colorful. Like whenever I speak about food, I feel colorful food will be enhancing our agni, and at the same time providing different kinds of the nutritions. So these different preparations can be used, like foxtail millet, coconut rice. Like again, this can be used, or else foxtail millet mango rice in the season of mangoes, or again millet salad. Again, it's a new concept, millet salad, or barley salad. Like in that, like you put the boiled grain, along with that you use different kinds of the vegetables, as well as like few of the pulses also can be used. Boiled pulses can be used, and making it a one pot meal. So that can also be done, which will be a tasty version also. Or else this Orissa little millet enduri pitha. Again, it is a sweet preparation wrapped in the millet covering. Again, this can including it in the menu will be difficult, but uh, in the other way diet can be included. So these are few other photos of ragi, wherein ragi drink has been prepared, or ragi balls are being served as a menu. And again, if one is interested in sweets, then payasam can also be prepared with all these millets. Again, sometimes laddus can be prepared with the millets, or as I told, salads, like this is a jawar salad. So like that, variety can be brought about. And again, few days the milk is being served. And I feel anemia is one among the very commonest problems that India is facing, whether it is children or women. Like it is quite common. So this chandrashura, which is one among the chaturbijas, and which is Vatahara also, and at the same time Balapushti Vardhaka. So that can be used in the payasam form. Like again, this is like sabudana, wherein it is quite slimy, and the quantity of milk added can be minimized, and this Chandrashura will give thickness also. So together, like 150 ml of milk that is being served for per kid on selected days in a week. So in this particular Chandrashura Payasa can be served, because nutritionally also it is rich. At the same time, it is tasty also. So that can be together having quite good effect. So totally, to conclude my today's presentation, the balanced diet is one among the very important aspect that has to be provided for the children. So different food groups, that is, it may be cereals and millets, or pulses of different varieties, different seasonal vegetables of different varieties, providing optimum amount of nutrition to the children, and providing the colors to the menu, or as well as color to the item that is prepared, because different cereals, different pulses, and different vegetables
are giving different colors so that the child will have the colorful health. And again, as I mentioned, quantity is very important thing. So we have to bring about the awareness about the quantity as well as shadrasas. Like here, if we speak about shadrasas, then madhura rasa is being provided by the cereals, and kashaya rasa and tikta rasa is being provided by the pulses, as well as few of the vegetables, and few vegetables are having madhura rasa, and amla rasa in the form of lemon that is being used for the seasoning, salt for the taste, and like that. And tikta rasa also, few of the vegetables are having tikta rasa. So like all the thing we include, then shadrasatmaka ahara that is being provided, and katu rasa is being provided by the spices that are used in the preparation of the different food items. So a balance has to be maintained, and anything in excess is not good. Ati sarvatra varjayet has been mentioned. So here, the like usage of different cereals as well as the pulses and the millets and vegetables in the cyclic menu will be balancing this particular aspect also. And again, what exactly change will be brought about to the community? That is, one thing is we are inculcating healthy food habits among the children. And second thing is dissemination of the knowledge from child to child strategy and child to parent strategy, and prevention of the non communicable diseases, as well as promotion of the nutrition and thus preventing the communicable diseases also. And at the same time, we are using the seasonal personal as well as seasonal food grains and the vegetables that will be benefiting the regional market. So this totally is quite practical with the multiple benefits to the multiple sectors, whether it is the agriculture, or it is the field of different employability of the downtrodden people. So all the aspect is, it is going to benefit. So that is about the presentation. I thank all of you for your patient listening, as well as providing me this opportunity to present a different topic on the food and nutrition, especially in the angle of midday meals. Thank you all. Again, if you have any doubts, I would be quite happy to clear that. Thank you. Thank you very much, madam. You have covered all the aspects, right from the nutritional to logical to social, everything. Excellent. Excellent. You Thank have you, made sir. the day, madam. You have really celebrated the day. Today is International Day of School Meals. So we are celebrating today that particular day. By heart thanks with regards. So now I would like to request Dr. Sushant Sahu from Balangir. Welcome, Dr. Sushant. Welcome. Okay, thank you, sir. Yes. Respected Professor Pawan Kumar Sharma sir and all the dignitaries. Actually, मैं एक फंक्शन में था, मैं सर को बोला था, लेकिन सर बोले कुछ जस्ट जितना भी हो सके एक्सटेम्पर जैसे बोल देना और आपका थॉट्स बताना है. तो ठीक है, जो मेरे प्रीवियस स्पीकर थे डॉक्टर मंगल गौरी राव मैम, वो तो डिटेल्स में बता चुके हैं. मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, बट जस्ट ये जो मतलब आयुर्वेद का आहार एंड मिड डे मील, तो इसके बारे में जस्ट थोड़ा थोड़ा मैं आप लोगों को बोलूंगा. इतना ज्यादा मैं डिटेल्स नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैडम ने तो ज्यादा मतलब डिटेल्स में बता दी हैं एंड आई थिंक सबको समझ में आ गया है. लेकिन मैं आपको व्हाई मिड डे मील एक्चुअली क्या है, ये हमको जानना जरूरी होता है. एक्चुअली प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने बोला था, since Indian children suffers not only from educational neglect but also from undernourishment on a scale that makes India a world better in the and unavoidable roles, the effectiveness of midday meal can be very large indeed in jointly addressing several pivotal problems together. ये कोट जो है प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने बोला था. तो एक्चुअली क्या इंडिया जो है एक्चुअली सिर्फ मतलब एजुकेशन में नहीं बल्कि न्यूट्रिशन में भी
बहुत कमजोर है। इसीलिए ये जो मिड डे मील प्रोग्राम लॉन्च किया गया था 2005 में या फिर 4 में, तो इसका जो मतलब मोटो था कि इंडिया में कोई बच्चा या फिर कोई स्कूल गोइंग चिल्ड्रन का अंडर न्यूट्रिशन ना हो। एक्चुअली ज्यादा तक इंडिया में अंडर न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम रहता है, जैसे कि स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में। तो उसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया था। तो इसका पर्पज क्या था, क्यों एक्चुअली मिड डे मील का लॉन्च हुआ था? प्रोमोटिंग स्कूल पार्टिसिपेशन। एक्चुअली स्कूल का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। एक्चुअली इंडिया में बहुत सारे क्या होता है, जो गांव में रूरल एरिया में स्कूल रहता है, बच्चे लोग स्कूल जाते नहीं है। तो एक्चुअली मिड डे मील के थ्रू उनको अट्रैक्ट किया गया कि एक्चुअली स्कूल में खाना मिल रहा है, मुफ्त में मिल रहा है, तो बच्चे ज्यादा से ज्यादा बच्चे स्कूल जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन होगा। प्रिवेंटिंग क्लासरूम हंगर, जो क्या होता है, बहुत बच्चे क्या करते हैं, सुबह घर में खा लेते हैं, उसके बाद स्कूल चले जाते हैं, दोपहर का मील को स्किप कर लेते हैं, उसके बाद वो लोग फिर शाम को आते हैं। तो जो दोपहर का मील को स्किप हो जाता है, तो उनका क्या होता है, न्यूट्रिशनल वैल्यू कम हो जाता है। उनको जितना न्यूट्रिशन चाहिए पर डे, जितना कैलोरी चाहिए, वो हो नहीं पाता। इसीलिए क्या करते हैं कि अगर मिड डे मील होगा या फिर स्कूल में अगर खाना मिलेगा बच्चे को, तो वो उसका न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम नहीं आएगा। एंड नेक्स्ट वन इज फैसिलिटेटिंग हेल्दी ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन। तो मिड डे मील के माध्यम से क्या होगा, चिल्ड्रन का हेल्दी ग्रोथ हो पाएगा। उसका जितना ग्रोथ होना चाहिए बाय द एज के हिसाब से जो ग्रोथ होना चाहिए वो होगा। इसीलिए मिड डे मील का लॉन्च हुआ था। इंट्रिंसिक एजुकेशनल वैल्यू एंड एजुकेशन ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीन वाटर, सैनिटेशन, एनवायरमेंट, एवरीथिंग स्कूल में सब कुछ मिल जाएगा। एंड फोस्टरिंग सोशल एंड जेंडर इक्वलिटी। एक्चुअली क्या होता है, पहले जब एक टाइम था कि ज्यादा तक मेल लोग स्कूलिंग करते थे, स्कूल जाते थे, फीमेल चिल्ड्रन को स्कूल नहीं भेजते थे, तो जेंडर इक्वलिटी भी आएगा। इसीलिए मिड डे मील का लॉन्च हुआ था। साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स, साइकोलॉजिकल डिप्रिवेशन लीड्स टू लो सेल्फ एस्टीम, इनसिक्योरिटी, स्ट्रेस, एमडीएम कैन फैसिलिटेट इमोशनल, कॉग्निटिव एंड सोशल डेवलपमेंट। अगर स्कूल में बच्चे को खाना मिलेगा मिड डे मील के मतलब मिड डे मील का प्रोग्राम के अंतर्गत, तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा बच्चे स्कूल आएंगे, उनका वो सिक्योरिटी मिलेगा, उनका स्ट्रेस फ्री होगा। तो इसके लिए मिड डे मील का जरूरत था। तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इंप्रूविंग द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन इन क्लास 1 to 8 इन गवर्नमेंट, लोकल बॉडी एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल एंड ईजीएस एंड एआईएस सेंटर। तो जितना भी गवर्नमेंट स्कूल था या फिर सेमी गवर्नमेंट स्कूल था, आशा सेंटर था, आंगनबाड़ी सेंटर था, तो वहाँ क्लास 1 से क्लास 8 तक बच्चे को मतलब जैसे कि मिड डे मील न्यूट्रिशनल वैल्यू मिले, इसीलिए हुआ था। एनकरेजिंग पुअर चिल्ड्रन, जो पुअर चिल्ड्रन है क्या, जिनको क्या है, एक दिन का खाना नहीं मिलता है, उनके माता पिता का पर डे का इनकम बहुत कम रहता है, वो बच्चे को प्रॉपर्ली न्यूट्रिशनल फूड दे नहीं पाते। तो मिड डे मील के जो अंतर्गत क्या है, बच्चे स्कूल जाएगा, स्कूल में अच्छा खाना मिलेगा, तो उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ेगा। बिलोंगिंग टू डिसएडवांटेज सेक्शन टू अटेंड स्कूल मोर रेगुलरली एंड हेल्प देम कंसंट्रेट ऑन क्लासरूम एक्टिविटीज। एंड अगर मिड डे मील स्कूल में मिल रहा है खाना, तो बच्चे क्या करेंगे, स्कूल में खाना मिल रहा है तो ज्यादा बच्चे स्कूल जाएंगे, तो स्कूल में अटेंडेंस ज्यादा होगा, ज्यादा बच्चे एजुकेटेड होंगे। तो इसके लिए ही उसका मेन ऑब्जेक्टिव था। प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू चिल्ड्रन ऑफ प्राइमरी स्टेज इन डॉट अफेक्टेड एरिया ड्यूरिंग समर वेकेशन। तो समर वेकेशन में भी अगर बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, तो उसके घर में लाके ही वो सप्लाई कर देते, घर में बना के खा सके। इसीलिए मिड डे मील में जो जितना मिड डे मील का इम्प्रूवमेंट हुआ है, और बच्चे इसीलिए ही ज्यादा तक ज्यादा मतलब जो रूरल एरिया में बच्चे स्कूल जाने लगे हैं। एंड टारगेट ग्रुप कौन है, प्राइमरी, अपर प्राइमरी। तो प्राइमरी में मतलब 2007 से 9.70 करोड़ बच्चे गए थे, और 8-9 में स्टेट प्रपोजल के हिसाब से 9.54 हुआ था, अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 8.24। तो इस हिसाब से प्राइमरी स्कूल एंड अपर प्राइमरी स्कूल जो है, जो कि एक्चुअली हम लोग बोलते हैं प्राइमरी स्कूल एंड अपर प्राइमरी अप टू 8th क्लास, तो उस क्लास तक मिड डे मील दिया जाता था। तो इसीलिए बच्चे ना ज्यादा तक ज्यादा स्कूल आएंगे, स्कूल आने से उनको न्यूट्रिशनल वैल्यू भी मिलेगा, और इंडिया में एजुकेशनल रेट ज्यादा बढ़ेगा। एंड नॉर्म क्या था, कैलोरी, प्राइमरी बच्चों को मिनिमम 450 कैलोरी चाहिए, एंड अपर प्राइमरी में 700 कैलोरी चाहिए। इसीलिए प्रोटीन हिसाब से 12 ग्राम प्रोटीन, 20 ग्राम प्रोटीन, माइक्रोन्यूट्रिएंट भी एडिक्वेट क्वांटिटी में हो, इसीलिए मिड डे मील का प्रोग्राम लॉन्च हुआ था। तो क्या होता था स्कूल में ना, पहले जब स्टार्ट हुआ था, ज्यादा तक मतलब राइस दाल ये सब देते थे, राइस दाल ऑयल, उस हिसाब से जो सप्लाई आता उस हिसाब से। आजकल धीरे धीरे एग ऐड हो गया है, प्रोटीन वैल्यू, प्रोटीन ज्यादा हो, इसीलिए एग को भी ऐड किया गया है मिड डे मील में। एंड अगर इस हिसाब से देखें तो कन्वर्ट विद एनआरएचएम, आजकल जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन से
मिड डे मील का कन्वर्जन हो गया है। मिड डे मील स्कीम सीक कन्वर्जन थ्रू रेगुलर हेल्थ चेकअप। उसके बाद गवर्नमेंट क्या है, उनको मिड डे मील भी दिया जाएगा, उसके साथ बच्चों को रेगुलर स्कूल हेल्थ प्रोग्राम भी उसके अंतर्गत आ गया है आजकल। इसीलिए रेगुलरली बच्चों का हेल्थ चेकअप भी हो पा रहा है। सप्लीमेंटेशन ऑफ माइक्रो न्यूट्रिशन, डीवर्मिंग मेडिसिन, डीवर्मिंग मेडिसिन दिया जा रहा है। वर्मिंग फ्री हो रहेगा तो उसका डाइजेशन में इंप्रूव होगा, वो उसका मतलब बॉडी में एसिमिलेशन ज्यादा हो पाएगा, उसके साथ साथ बच्चों का न्यूट्रिशनल ग्रोथ भी हो पाएगा। तो अगर हम देखें तो आयुर्वेद में जो दिया गया कल्पना, पथ्य कल्पना, एक्चुअली जो कल्पना आयुर्वेद में बोला गया जैसे कि पेया, विलेपी, जूस, मांस रस, ये सब का धीरे धीरे मेरे विचार में मिड डे मील में एक्चुअली आपकी आवाज बंद हो गई सुशांत जी। तो एक्चुअली क्या है, इंडिया में धीरे धीरे जो मिलेट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। तो अपना जो उड़ीसा प्रांत है, यहाँ मिलेट्स का जैसे कि ज्वार मिलता है, बाजरा, या फिर ज्यादा तक बोले आपका जो गोधान्य, कोद्रव, कोदो धान, ये सब उड़ीसा में बहुत सारा मिलता है। और उसको लेके वेराइटीज ऑफ प्रिपरेशन करके हम लोग बच्चे को जो मिड डे मील में इंक्लूड कर सकते हैं। और मिड डे मील का जो मेन मोटो है कि कोई बच्चे का न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ना हो और हर स्कूल गोइंग बच्चे का न्यूट्रिशनल वैल्यू ठीक रहे। तो उसके अंतर्गत हम देखेंगे तो अपना जो आयुर्वेद का कल्पना है जैसे कि पेया, विलेपी, जवागो, यूज एंड पथ्य कल्पना, उसको एक्चुअली अगर मिड डे मील में मिड डे मील के अंतर्गत उसको इंक्लूड किया जाए तो बच्चों का न्यूट्रिशनल ग्रोथ ज्यादा हो पाएगा। ये एक्चुअली मेरे विचार है कि जैसे कि पथ्य कल्पना है, वो लोग स्कूल में क्या है सिर्फ राइस एंड दाल मिल जाता है, तो उसको प्रॉपर कल्पना सीजनल, अकॉर्डिंग टू सीजन, अकॉर्डिंग टू मतलब जो सीजन में जो फ्रूट मिले, जो सीजन में जो वेजिटेबल मिले, उस हिसाब से अकॉर्डिंग टू अगर उनको मिड डे मील में पथ्य कल्पना को ऐड किया जाए तो बच्चों का न्यूट्रिशनल ग्रोथ होने के साथ साथ बौद्धिक विकास भी ठीक से हो पाएगा। जैसे कि सपोज हम लोग रेगुलरली स्कूल में क्या होता है, उनको राइस एंड दाल मिलता है या फिर कभी मिक्स वेज, तो ऐसा ना हो के सीजन के अकॉर्डिंगली जिस सीजन में जो लघु आहार जब चाहिए, जैसे कि मतलब जब मतलब ठंड के मौसम हो गया या फिर अपना बारिश के मौसम, उस टाइम एक्चुअली अग्नि थोड़ा दुर्बल रहता है। तो बारिश के मौसम में जब अग्नि दुर्बल रहता है तो उनको लाइट पथ्य है, लाइट पथ्य कल्पना है, उसको देना। जैसे कि उनको पेया, विलेपी, जवागो, खिचड़ी करके, कुसरा करके, ऐसे हम लोग बच्चों को दे सकते हैं। तो इसके क्या होगा, फायदा क्या होगा कि सीजन अकॉर्डिंगली होगा तो उनका डाइजेशन प्रॉपर्ली होगा, बॉडी में उसका एसिमिलेशन ठीक से हो पाएगा, एंड बच्चे का जो मतलब ग्रोथ होगा प्रॉपर्ली ग्रोथ हो पाएगा। तो एक्चुअली पानी या कल्पना भी है, जैसे कि अभी गर्मी का मौसम चल रहा है तो गर्मी बच्चों को मतलब मिड डे मील में उसके साथ एक पानी भी ऐड कर सकते हैं। पानी ऐड करेंगे तो उसका क्या होगा, डिहाइड्रेशन नहीं होगा एंड उनका जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस नहीं होगा। तो इस हिसाब से हम लोग वैरायटीज ऑफ पथ्य कल्पना जो है आयुर्वेद में, पेया, विलेपी हो गया, क्रुशरा हो गया, उसको हम लोग अगर मिड डे में ऐड हो पाएगा, मतलब गवर्नमेंट को एक प्रपोजल दिया जाए, उस हिसाब से मिड डे मील में उसको ऐड किया जाए तो उसका बेनिफिट जो इंडिया का जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है उनको मिलेगा। उसके साथ साथ बच्चे भी अट्रैक्ट होंगे कि स्कूल में ना कि सिर्फ राइस दाल मिल रहा है, वैरायटीज ऑफ सूप मिल रहा है, जूस मिल रहा है, तो बच्चे स्कूल ज्यादा आएंगे एंड एजुकेशनल ग्रोथ भी इंडिया में ज्यादा होगा। तो एक्चुअली जो पथ्य कल्पना है, एक्चुअली बोला गया है आयुर्वेद में, बोला है
पथे सति गदार्थस्य किम औषधं निषेवनम, पथे असति गदार्थस्यम किम औषधम निषेवनम। अगर हम पथ्य में रहे या फिर बच्चे को पथ्य में रखें तो उसको कोई बीमारी नहीं होगा, जैसे कि उसको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी नहीं होगा। तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से जो रोग होते हैं, जैसे कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, एनीमिया हो गया, आपका कृमि रोग हो गया, तो ये सब रोग नहीं होगा और बच्चे का ग्रोथ ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ हो पाएगा। तो इसीलिए मिड डे मील में आयुर्वेद का जो पथ्य कल्पना है उसको अगर गवर्नमेंट को प्रपोजल दे के उसको ऐड करवा पाएंगे या फिर गवर्नमेंट उसको अंडरटेक करके उसके ऊपर मतलब विचार करके उसको मतलब लागू कर पाएंगे गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट को अगर हम प्रपोजल देंगे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है प्राइमरी एजुकेशन, तो ये मैं सोच रहा हूँ कि बच्चों को ज्यादा बेनिफिट होगा। तो मैडम तो डिटेल्स में गए हैं कि कौन सा डाइट का क्या बेनिफिट्स है, इसीलिए मैं इतना डिटेल्स बोलना नहीं चाहता हूँ। एनी हाउ थैंक यू पवन सर फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी एंड मेरा एक बिजी शेड्यूल था, इसके बाद भी मैंने जितना हो पाए कोशिश किया, इसीलिए माफी चाहता हूँ इतना ज्यादा मैं बोल नहीं थैंक पाया। यू वेरी मच, अगर थैंक यू कभी सो मच, मतलब फ्यूचर में, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच सुशांत जी, थैंक यू। I salute youngsters for this zeal to promote Ayurveda. Thank you very much. मैं आदरणीय निशांत जी से आग्रह करूंगा, निशांत शुक्ला जी, शायद कनेक्शन कट हुआ है। डॉक्टर नितिन उर्मलिया जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी सर। हाँ, आज के कंक्लूडिंग रिमार्क्स। जी 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 सर। तो मैंने सर अटेंड किया है, पूरा प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था। और बाकी मुझे तो मैं नहीं बोलना चाहूंगा कुछ ऐसा मिड डे मील क्यों बनाया गया, इससे क्या होगा। मैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है जो मैं कुछ शेयर करना चाह रहा हूं मैं। तो जरूर स्वागत है जी जी, थैंक यू सर। तो मिड डे मील के जैसे बताया गया है कि बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए उनके न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी जो डिसीजेस होती थी वो ना हो, उसके लिए गवर्नमेंट का बहुत बड़ा प्लान है। तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो कितना कारगर होगा वो हमको देखने के लिए एनालिसिस भी कुछ अच्छे करने पड़ेंगे। तो जिसमें पहले हमारे अगध में वर्णन है, अगध तंत्र में पहले राजाओं को जब खाना जाता था तो राजवैद्य हुआ करते थे। राजवैद्य उस खाने को एक एक आइटम को चेक कराते थे, पशु पक्षियों को पहले देते थे। पशु पक्षी में कुछ विशिष्ट लक्षण उत्पन्न होते थे, अगर पॉइजनस है तो, अगर कम पॉइजनस है तो भी लक्षण कम उत्पन्न होते थे, और अगर पॉइजनस नहीं है तो कोई लक्षण उत्पन्न नहीं होते थे। ऐसा दृष्टांत आयुर्वेद में बहुत अच्छा मेंशन है। तो मैं ये नहीं चाहूंगा कि ऐसा ही करें, पर कोई भी फूड को एक बार चेक जरूर करें। और चेक करने के लिए पशु पक्षी भी हैं और ज्वाला फ्लेम टेस्ट भी होता है। अगर आप डालेंगे सीधे ज्वाला में, आग में, तो अगर जहरीला होगा तो मोर के पंख के समान आभा वाली रोशनी दिखाई देगी और चट चट की आवाज बहुत ज्यादा आएगी। और अगर खाना सही है तो कोई आवाज नहीं आएगी, फ्लेम टेस्ट एक ही नॉर्मल रहेगी। तो ये भी टेस्ट है, ऐसे लाखों 10 टेस्ट है। मैं ज्यादा जिक्र नहीं करूंगा, मैं इसका एक प्रेजेंटेशन बाद में ले लूंगा। तो ऐसे टेस्ट हैं, तो उसमें हम अगर थोड़ा सा ध्यान दें कि खाना जो बन रहा है प्रॉपर सही आइटम्स उसमें यूज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। और हमारा क्राइटेरिया एक्चुअली है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स और मिनरल्स, इसको बॉडी में पहुंचाना है। तो कितना बच्चे को चाहिए और बच्चे को कितना, जब वो स्कूल में ज्वाइन किया था तब कितना था, और आफ्टर मील पूरा 1 ईयर के एनालिसिस के बाद कितना उसका रेशियो है, ये इसके लिए कुछ प्रणाली, कुछ नापतोल होना चाहिए मेरे ख्याल से ऐसा। तो 2 पॉइंट मैं यहाँ हाईलाइट करूंगा मैं। पथ्य सती गदार्ता से किम औषधम, अगर सर ने भी बोला था, बहुत सुशांत सर ने, अगर पथ्य का पालन हम करें तो हमें किसी औषधि, किसी भी बीमारी से हम जकड़ा नहीं होगी और ना ही कोई बीमारी होगी, हमें ना ही कोई औषध की जरूरत है। लेकिन अगर हम पथ्य का सही ढंग से प्रयोग नहीं कर पाएंगे तो वो खुद एक रोगोत्पादक कारण बन जाता है। तो ये हम इस बात का ध्यान रखें, उसका प्रिवेंशन करें, थोड़ा सा उसको ऑब्जर्व करें कि खाना सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और प्लस का एनालिसिस करें। तो ये 2 बातें मैं थोड़ा सा शेयर करना चाह रहा था। इसके लिए धन्यवाद पवन सर, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब डॉक्टर जगदीश्वर डोमा जी से आग्रह करता हूं। डॉक्टर जगदीश्वर जी, एम आई ऑडिबल टू यू सर? हाँ दादाजी, स्वागत है। ऑडिबल है, ऑडिबल है।
सभी को मेरा विनम्र प्रणाम। जी सर, स्वागत है। सुने आ रहे दादाजी? हाँ, क्लियर सर, क्लियर आ रहा है। शायद आज मिड डे मील के बारे में कुछ बोल रहे थे। एक तो इंसिडेंटली मैं बताना चाहता हूँ कि आजकल के चिल्ड्रन में ग्रोथ कैसा हो रहा है, इसमें अगर देखा जाए कि चिल्ड्रन ग्रोथ में जनरली फास्ट फूड के पीछे ही बहुत लोगों का ऐसा ध्यान हो रहा है। और फास्ट फूड में वो भी बाजार में जो मिलता है वो चीप फूड, उसके चक्कर में माने बच्चे जो है ना टेस्ट से ज्यादा एकदम जुड़े जाते हैं, उसके ज्यादा असर पड़ रहा है। और मिड डे मील का जो भी लॉन्च किया गया, I think that during my childrenhood only, when I was in upper primary school, जब से ही इसका प्रस्ताव था और इंट्रोडक्शन हो रहा था, और आज तक भी मिड डे मील के बारे में क्या मेंटेन हो रहा है, कहाँ हो रहा है, सेंटर से कितना हो रहा है, स्टेट से कितना हो रहा है, if you go for analysis in different states and in different angles, I think that it is left to the audience and left to the observers and the society. But here I am giving a special comment about the society. Society को अगर हम एक तरह से जाने, संस्कृत में समाजा, समान येजते इति ही समाजः। समान येजते माने going ahead with all, somebody is lagging and somebody is forward. This is not samaja, according to Anandamurti. He clarified, समाजा उससे बोलते हैं जहां आगे पीछे नहीं होना चाहिए और सब लोग जो है ना एक साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं, उसे समाजा कहा जाता है। तो आज के समाजा में देखे तो चिल्ड्रन का फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज। हेलो, इज इट ऑडिबल दादाजी? हेलो, हाँ जी, क्लियर, लाउड एंड क्लियर सर। तब अभी समाज में अगर देखा जाए, डिफरेंट ग्रुप्स एंड डिफरेंट सेक्शंस एंड वो लोगों का फीडिंग एंड ऑल दीस थिंग्स अगर देखे तो पहले जो है बेस जो होता है इन्फेंटाइल स्टेज में, घर का लालन पोषण में होता है। उसके बाद जो है ना जब स्कूल में आते हैं तो चिल्ड्रन का नरिशमेंट कैसा होता है, इसको ओवरऑल एक लुक लेना पड़ता है। एग्जाम्पल इncidental I am giving you that feeding in central scheme near Hyderabad there is one Kasturba केंद्रीय विद्यालय, I think so. वहां पर नरिशमेंट जो होता है एक्चुअली with total instructions of center guidelines and provision something. तो एक बार ने वहां पर हेल्थ चेकअप के लिए सेंटर से डिप्यूट किया गया था, और डिप्यूट करने के बाद उन्होंने ऑब्जर्वेशन में शायद 1 महीने के लिए रखे। तो वो महीना पूरा उन्होंने देखभाल करती थी कि न्यूट्रिशन एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू दिस सेंट्रल इंस्ट्रक्शन। बट चिल्ड्रन जो है ना वेट ग्रोथ नहीं हो रहा है, पुटअप नहीं हो सक रहा है। तो तुरंत सेंट्रल से जो रिप्रेजेंटेटिव था उन्होंने ये याद दिलाया कि आप लोग जो न्यूट्रिशन यहाँ पर दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू सेंट्रल कमिटी, ऑल राइट, बट यू आर नॉट एडिंग क्लैरिफाइड बटर माने घी जो है ना आप लोग दे रहे हैं, जिससे जो है ना चिल्ड्रन का जो है ग्रोथ नहीं होता है, और साथ साथ बुद्धि माने इंटेलिजेंस का विकास नहीं होता है। अभी आप लोग जो है ना फॉर एवरी बेबी 250 grams of clarified butter should be provided in a month। तब से जो है ना 1 महीना ऑब्जर्वेशन करे तो ग्रोथ जो है ना होना शुरू किया। दिस वाज द रिपोर्ट ऑफ द मीडिया। लाइकली इफ यू गो
just for analysis. How many people are being educated that घी जो है ना इतना सहायता देता है। अभी ये ध्यान से देखें, मेरे अभी चिकित्सा हो रहा है जिसका एनोरेक्टल कैंसर हुआ, ऑपरेशन हुआ, उसके बाद में जो है ना सर्जन बोला अब जो है ना इनको गिनती करते जाओ घंटों का या ऐसा दिनों का, इतना ही बोल करके छोड़ दिया। तो वो लोग जो है ना मेरे कांटेक्ट में रहने से, खूब मेरे ऊपर प्रेशर करने से मैं टेकअप कर रहा हूँ। तो he was superintendent of some district court and sub judiciary court, like that. He hesitates to take घी खाना वो नहीं चाहता। अगर समझिए कि वो दवा एक माने हालत से मैं उन्हें चिंगेरी घृत दे रहा हूं, तो चिंगेरी घृत देते समय वो बोलता है मैं घी नहीं खाऊंगा, मुझे घी पसंद नहीं है। तो उनका बेटा जो है ना बोल रहे सर इसे आप घृत मत बोलिए, घी मत बोलिए, डालडा बोल दीजिए, पिताजी खाएगा। तो ये डालडा में प्रिपरेशन हुआ है, पिताजी खाएगा। माने उनका मेंटली इतना डिस्टॉर्टेड हुआ है, घी बोले तो वो नहीं खाएगा, वो डालडा प्रिपरेशन बोले तो खाएगा। अभी उनका हालत वो एनोरेक्टल ऑपरेशन हुआ, उसीलिए तो उनको गुदभ्रंश के जो चिंगेरी घृत काम आता, वो चिंगेरी घृत कोई कंपनी नहीं बनाता। मैं केवल नरनारायण में देखा हूँ, गुजरात का, अहमदाबाद का, उसमें से सिलेक्ट करके जो है मैं पेशेंटों पर ट्रायल कर रहा हूँ और उन्हें आज चिंगेरी घृत खिला रहा हूँ। चिंगेरी घृत खाने में उन्होंने जो है डालडा बोलने पर खाएगा, लेकिन घी बोलने पर नहीं खा। अभी भी वो घी बोले तो डाइट में घी सवाल ही नहीं, मर भी जाए लेकिन घी नहीं खाएंगे। उनका दिमाग वैसा बना है। माने अभी चिल्ड्रन के स्टेज में से अगर ये देते जाए, ऑब्जर्वेशन करते जाए, घी का महत्व, आप चाहिए सीरियल्स बोलिए, वो पल्सेस बोलिए, उतना बोलिए, इतना बोलिए, लंबी चौड़ी कितना भी बोलिए, आप बैलेंस में देखते जाइए। इफ इट इज माइनस घी अगर होता तो मैं ये बोलता हूँ कि उसका इंटेलिजेंस, वृद्धि, बुद्धि का विकसित होता नहीं है। और दूसरी बात, यहाँ पर और एक प्रस्ताव कर रहा हूँ कि एंटेलमेटिक, अभी जो बोल रहे हैं क्रिमिग्न के बारे में, जो दवाएं दिया जाता है उसका एपेटाइट बढ़ जाता है। अरे भैया मैं तो बोलता हूँ कि वो लोग क्या देते क्या नहीं देते, कम से कम विडंग का कॉम्बिनेशन से अगर दिए, प्रकृति का रीति से, प्रकृति रीति से अगर विडंग का कॉम्बिनेशन दिए, या तो जैसा कि अश्वकंचकी जैसा बच्चों का 64 बीमारी में काम आता, अगर आयुर्वेदिक साइड में आज भी अगर सेंटर का बुद्धि का चेतना होता है, तो कौन सी दवाएं किस सेक्शन में, किस थेरेपी में ज्यादा यूजफुल होता है चिल्ड्रन के लिए, तो तुरंत जो है ना वो एक्टिव हो जाते हैं और पिकअप हो जाते हैं। इसी के अगर ऑब्जर्वेशन नेशनल लेवल, बिकॉज आयुर्वेदा इज द मेडिसिन ऑफ भारत, तब कितने लोग अश्वकंची के बारे में दौड़ रहे हैं, या सेंटर्स की में आप बता दीजिए कि कितने लोग ने ध्यान दिए हैं ये बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। कोई नहीं है। इसीलिए हम उदास होना पड़ता है। एक जिस किसी के स्तर पर अगर देखे, आयुर्वेदिक का ये लोग जो है ना कितना ध्यान दे रहे हैं, और मल्टीफेरियस इफेक्ट, अभी जो है ना बहुत सा ऋतु का जो चेंज होते, बहुत से हरकतें हो रहे बच्चों में, काफी बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। स्कूल में मेरा नवासा भी जिसमें पढ़ता है, सरस्वती शिशु मंदिर, वहां पर भी देख रहे हैं। और साथ साथ मेरा बेटी तो मेरा नवासा एकदम रोजाना 2 गोली अश्वकंची की डाल देते हैं। वो 1 गोली मेरे लिए बस होता है, लेकिन उसको 2 गोली का जरूरत पड़ता है। 2 गोली अश्वकंची की देते जा रहा है। मैं बोल रहा कितने दिन से दे रहे हैं? अरे रेगुलर दे रहा हूँ पिताजी। क्यों? इसका कफ जो है ना कम से कम उसने हटा दिया है, क्योंकि उनको एक बार मराठी में पढ़ा के सुनाया था। जब से जो है इन्होंने ध्यान दे दिया, जल्दी ये बलगम खत्म नहीं होता है कि इसीलिए अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का काफी पकड़ करके है, तो वो देते जा रहे। फिर भी मेरा नवासा जो है ना कोई हरकत नहीं है, आराम से है, स्वास्थ्य है। मैं ये समझता हूँ कम से कम बुद्धि जग गई। मेरे बेटे का BMS पढ़ा के उसे दे रहे हैं।
मैं कहीं बार बोल रहा हूँ कनकबाला सूर्योदय देव इसे, क्योंकि हमारे यहाँ एक चीज है आयुर्वेदिक सिस्टम में बहुत खूबी से कि कौन सी दवाएं किस किस सेक्शन में वो कहा गया, वो चाहे चरक में या वाग्भट में या कहीं कहीं उस संदर्भ में जो दिया गया सार ठीक तरीके से अगर उपयोग करे बहुत ही लाभदायक होता है समाज के लिए। इसीलिए